हाय एवरीबॉडी। फाइनली वो दिन हो गया जिस दिन के लिए इतना मेहनत की है, जिस दिन के लिए इतना टेंशन लिए थे, जिस दिन के बारे में हम 1 साल से सोच रहे थे। राइट, आई एम गोइंग टू आई along with our whole team, we are going to analyze all the 3 slots for you, uh, and end pay if at all you still have any questions, we'll take them. Okay, and yeah, all the questions will be answered. Everything I'll answer. Uh, but before I start, I want each and every one of you to type in the chat box. आपकी हिसाब से आपकी स्लॉट नंबर के साथ बोलो। स्लॉट 1 इजी है, मॉडरेटेड डिफिकल्ट है। स्लॉट 2 वाले बोल दो इजी है, मॉडरेटेड डिफिकल्ट है। टाइप योर स्लॉट नंबर and then type the level. Let's listen from each and every one of you. So we have people saying slot 1 moderate, slot 1 moderate, slot 3 moderate, slot 2 moderate, slot 2 moderate to difficult, slot 3 moderate to difficult. And also tell me how many attempts each one of you have done section wise. Section wise attempts I want to know. Slot 1 is easy to moderate. Okay, easy to moderate. Slot 3 moderate to difficult. Slot 3 tough. Okay. 18, 13, 8. Which slot Devanshi? 18, 13, 8, 4. Or her VARC, LRDA, Quant. 16, 13, 10. 14, 6, 5, 15, 17, 12, Siddhant. Okay. 14, 8, 10, Akshat. 20, 20, 13, Vatsal. 40 plus, you have attempted for what? 53 into 3, 159 marks. Okay, not bad. 44 questions, good. 16, 7, 5. 16, 9, 9, not bad. 14, 12, 14. 17, 11, sorry, 17, 12, 8. 14, 5, 14, 8, 14, Akshay. Not bad, Akshay. 14, 8, 5, okay. ऑप्शन सेलेक्ट करके मार्क किया तो वो काउंट होगा है, नहीं होगा. यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. ओके, 20, 13, 10 निखिल, कूल. 14, 12, 10 प्रियांशी गांधी. सो आप लोगों ने मोटा मोटा भूल दिया है. पेपर वाज ऑलमोस्ट ऑन द मॉडरेट शॉट्स, राइट. मैं और विघ्नेश सर कल डिस्कस कर रहे थे कि हर बंदा सोच रहे है कि टफ देगा टफ देगा टफ देगा, लेकिन IIM वाले तो उल्टा ही सोचेंगे. सो उन्होंने मॉडरेट दे दिया. Cool, Rohini. So let me quickly start with the analysis. Yes, my PPT. Yes, here we go. So पहले let me discuss the overall 3 slots में जो भी changes है. ठीक है, इस बार LRDA का 5 sets है, and LRDA has been comparatively easier. People could do 2 sets, 3 sets also. Some of the people could do 1 set. तो हर बंदा जरूर करना था. ठीक है, VARC में वर्बल एबिलिटी और आरसी दोनों मिलके आ रहे थे. पहले ऐसा होता था सारे आरसी एक तरफ और सारे VA एक तरफ, बट इस बार मिक्स करके आते थे एंड डायरेक्ट PYQs आते थे. जो भी डायरेक्ट PYQs, बहुत पुराना का भी नहीं. स्लॉट 2 में तो लास्ट ईयर का ही आए थे, स्ट्रेट फ्रॉम स्लॉट 1. ठीक है, एंड स्लॉट 1 में भी वो क्वेश्चन मिलके 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 जा रहे थे लोग, साइंस पे डिस्टेंस वाले. मैंने जो गोल्ड क्वेश्चंस में लास्ट 3 क्वेश्चंस रखा है, उसमें वही क्वेश्चन वापस दिए थे. राइट, यू कुड सी दैट पेपर वाज एक्साइटिंग टू गिव, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट वाज मॉडरेट. करते समय तो पैनिक होने का चांसेस कम है. पेपर टफ नहीं लगता है. राइट, नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल स्लॉट एनालिसिस. Mine was slot 1. So here I have the analysis of the slot 1 VARC especially. Do we have Sweta ma'am with us? Okay.
No worries. See, here we go. These are the uh, levels and also the types of the passages that we have, and we as a whole team came up with this conclusion. Finally, there was one passage, that was the crafts wala passage, where they were discussing about employment for the people based upon the creativity, time, and everything. That was the first RC passage, and then there was a economy based passage, and rest all mostly you could see 18 questions out of the 24 questions were moderate. There was literally not even a one question where which we could keep in the difficult level, right? And we have to see for the result. I mean, how it turns around. And one good thing is परसेंटेज पैराजम्बुल में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, एंड पैराजम्बुल्स भी नहीं है. पैराजम्बुल्स बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग होता है. फॉर्चुनेटली दिस होल ईयर वी डिड नॉट हैव पैराजम्बुल्स, एंड एवरी ईयर कैट कोई ना कोई सरप्राइज देता है, एंड दिस वाज वन सरप्राइज. And three para completions were there, three para summary were there. Anybody who is good in RC should have definitely been doing good in this uh, year, because para summary 3 questions है, RC 16 questions है, totally 19 questions were completely based on comprehension, right? And there was one para completion also which was easy. Overall, this is the analysis of VARC. Now I'm moving forward to LRDA. So there were 5 sets, right? And I attempted that bloggers and starts wala, bahut aasan tha. And there was this stocks one. Stocks one was very simple, very very simple. Everybody should have touched stocks वाला set for the first. उसके बाद bloggers वाला पकड़ सकते थे, लेकिन elections वाला थोड़ा lengthy था पढ़ने के लिए. uh, but that was also doable as per many of the students, and I didn't spend much time on it. And this question visiting country wala would have become little difficult to understand what exactly is happening and how the number of countries have been visited by each and everyone. And this quiet game wala question, uh, that could have been, I would say, could have been picked up as a third set. क्वाइट गेम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाला क्वेश्चन वो भी थोड़ा टफ है, क्योंकि यू नीड टू क्रैक द लॉजिक इन दैट, स्पेशली हु विल प्ले विथ whom इन व्हाट राउंड. बट फॉर्चुनेटली क्वाइट गेम की सेट में मेनी क्वेश्चंस वर डेटा बेस्ड. इफ एट ऑल एक दो सेट बनने के बाद आपको चूज करना है, तो ये चूज करके कुछ तुक्का मार सकते थे, क्योंकि there were only 6 teams. They were asking which team will team 2 will play with. There are only 5 other options. तो कुछ तो लगा सकते थे, 1 3 4 5 6 में से आपका 20% चांस होता सही होने का. ठीक है, थोड़ा दूसरी क्वेश्चंस के ऑप्शन देखने के बाद की थोड़ा आइडिया आएगा कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हो. सो यू कुड हाफ गेस्ड द थर्ड सेट, बट 1 2 सेट्स तो, आई मीन 2 सेट्स तो आराम से निकाल सकते थे इसमें. ठीक है, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द LRDA. एंड कमिंग टू द slot 3 quant section, here we have the complete analysis, question wise and section wise. There are what 5 easy questions overall, right? एक इनरेडियस वाला क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है जहां वो आधा देता था और एक्स्ट्रा 3 देता था, ये तो लिटरल PYQ है. एंड एलिगेशन वाला ये तो इतनी L1 क्वेश्चन है. रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ, एलिगेशंस में कुछ भी मत करो, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट करके जाओ, वही वाला क्वेश्चन. एंड PLD का एक PYQ डायरेक्ट है. PLD का क्वेश्चन जो आया था वो PYQ 2006 2007 में आता था, वापस वही आ गया. एंड रिमाइंडर्स, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्लास जो भी रिवाइज किया, दे कुड हैव डन. ये 5 क्वेश्चन है विच वर इजी. इवन इफ यू वांट इन रेडियस वाला क्वेश्चन मॉडरेट में रख सकते हो. एंड कमिंग टू algebra was on tougher level, not only in slot 1, in all the slots. Not exactly tougher, moderate to tougher के बीच में था algebra. And we have this question, 3D geometry question was tougher, and modern maths में जो भी 2 क्वेश्चन थे दोनों टफ थे. नंबर सिस्टम में एक इंडाइसेस वाला क्वेश्चन है which had the concept of quadratic equation. They were asking for the sum of the real roots. And we had question based on certs, which was also little tricky question, right?
सट्स में बोला था नंबर सिस्टम में आपको सट्स एंड इंडाइसेस, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स, इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन आता है वही आता है, तो वही आया है वापस। ठीक है, स्लॉट 1 में। सो ओवरऑल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आप देख सकते हो। ठीक है, VARC के लिए 99 लाने के लिए यू नीड टू बी स्कोरिंग एनीवेयर अराउंड 36 मार्क्स इन दिस स्लॉट। LRDA में because it was on the easier side, you need to score around 40 marks for the 99 percentile. And quant में if you are anywhere around 32, the reason being quant में ना there are 9 tough questions. कोई भी क्वेश्चन में आप अटक गए ना, you will miss out on the easy question, and that's the reason, that's the only reason quant की स्कोर, क्वांट की परसेंटाइल कम स्कोर में भी ज्यादा परसेंटाइल आएगा, बिकॉज यू हैव टू मेक 22 डिसीजंस देयर। कोई भी डिसीजन में आपने गलत की, पकड़ जाओगे। ठीक है, ओके ध्रुव, हियर इज द ओवरऑल परसेंटाइल वर्सेस स्कोर। 110 मार्क्स में आपका 99.9 तक आएगा। इफ यू वांट अराउंड 99 परसेंटाइल, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर 83 to 85 मार्क्स इन दिस पेपर फॉर द स्लॉट 1, and 90 marks, I mean 90 percentile comes around 54 marks. ठीक है, this is for the sectional wise percentile and this is for the overall total percentile. ठीक है, this is with respect to slot 1. If anybody has any question with respect to slot 1, please ask me. Perfect. So same thing, slot 2 में भी वही है, जो चीजें हम slot 1 के लिए बोला है, ओवरऑल चेंजेस जो भी है वो सारे में सेम है। पैटर्न सबका सेम है। 22 क्वेश्चंस आए थे and 3 sets were there which are of 4 and 2 sets were there which are of 5. And then coming to the VARC analysis, this was the thing. याद रू इतना जाता है। सो देयर वर 4 पैसेज इन दिस, 2 इजी थे, 2 मॉडरेट थे। आई मीन हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मॉडरेट थे। पीयर रिव्यू वाले थे, वो इजी थे, एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाले तो मॉडरेट थे। एंड कमिंग टू पैरा समरी, देयर वाज 2 इजी क्वेश्चंस एंड 1 मॉडरेट क्वेश्चन। And art sentence parajumble, 2 moderate question. Para completion, there were 3 questions and 1 was easy, 1 was moderate and 1 was tough. Right? Even if you see, this was hovering around easy to moderate only. I mean moderate to tough. There were very less tough questions. There was 1 tough question as such. The thing is, the real level of the paper will be understood once it comes out down the line in 3 days in response sheet. That's when you will understand. Okay. So as of now, this is what we as a team are thinking about the paper. So now coming to the next, which is on LRDA. Here we have in all the 3 slots, if you see, any set that you invest time in, you are able to solve. That's the good thing. There were only 1 or 2 sets which were very shabby, but any set you pick, you could be able to solve. I mean, fortunately, decision making in LRDA was easy this time, right? No, it's okay, Dhaval. It's completely subjective. When we are saying one set is easy and one passage is easy and one passage is moderate, it need not be that what the world is thinking should be the same for you. Okay? So if you are good at VARC, हो सकता है whatever the world feels as moderate, you may feel easy. Okay? And overall there were easy moderate वाले 3 sets थे and moderate to difficult वाले 2 sets थे, right? सुडोकू वाले एंड डेटा अरेंजमेंट वाले, बार ग्राफ वाले, रूट्स एंड नेटवर्क वाले। रूट्स एंड नेटवर्क ऐसा है कि जो वो स्लॉट 2 में भी आया है, स्लॉट 3 में भी आया है, एंड इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, it was DI heavy. Slot 1 में भी है और slot 2 में भी है और slot 3 में भी। There were 3 sets on DI base in slot 1, 3 sets here again on the slot, 2 sets here again on DI base, and again slot 3 में भी there were 2 to 3 DI sets were there in LRDA. ठीक है, typical Calcutta paper. And yeah, as Harsh is saying, there won't be much of normalization. जो भी आपका स्कोर आता है, मे बी +or-1 +or-2 होगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, right? Coming to the quant section, quant section was comparatively tougher than the little comparatively tougher than the slot 1 as per the review, but there were 2 questions direct from 2023
If you even have solved 2023, 2 questions directly without even change in the numbers. That SICA वाला 20808 slot 1 में क्वेश्चन था लास्ट ईयर, वही क्वेश्चन slot 2 में आया था. If you have solved the slot 1 CAT 2023, you could have solved this CAT 2024 slot 2 question very easily. And number system में दो questions है and all easy to moderate, and algebra was on the moderate level, and there was one function question which was difficult, and arithmetic में 8 questions were there which fall under moderate again. Modern maths वाला 2 questions were there, I mean 1 to 2 questions, both were easy, and geometry वाला again there was easy. So I mean, if you go question wise, again quant will also fall under moderate level. So overall, if we talk about the percentile and score, this is where it stands with respect to each section. If you want to score 99.99 percentile, you need to be scoring anywhere around 118 to 123 marks. If you want to 99 percentile in this slot, 92 to 95 marks should be the what is expected. Yeah, maybe ho sakta hai double. And if you are thinking around 96 marks, you should be scoring 48 marks to 50, 48 to 50 marks. This is where it stands. If 36 marks should fetch you, I mean 36 to 38 marks should give you 80 percentile. इसी के यहाँ बहुत वेरिएशन होता है परसेंटाइल में हर 2-3 मार्क्स में. यू नीड टू नो दैट 40 के बाद थोड़ा अलग जाता है. 70 to 75 percentile, you may expect 30 marks or 28 marks. 28 to 30 marks should give you 75 percentile. Rishi. Right, this is what is for the slot 2. Now, if I talk about the slot 3. So, for VARC, this is how it goes. Space pollution wala question hai, that was considered as above moderate. Right? And then there was a question based on AI, science and tech passage. And there was question based on languages. Right? And then there was a question based on Chinese book. All were again falling in the moderate. And para summary was comparatively considered as tough in VARC for the slot 3. For VARC compared to slot 1 and slot 2, slot 3 was little on the above moderate side. Right? Para completion where there was one easy question, and OSPJ, both the questions were moderate. Right? Approximately 16 questions were moderate in this. Okay. So that is with respect to VARC. And coming to LRDI, this is how it goes. Anybody who is good at LRDI, they were touching even the 4th set. Right? They were even touching the 4th set. I mean, if you are comfortable with LRDI, you should be happily doing 3 sets in this paper. And if you solve anywhere around 2.5 sets, you should be touching that 98-99 percentile. Okay. So there was one set which was considered as tough in slot 3, which was GDP based set. All the others were easy to moderate. Serials, OTT wala, AC temperature wala. AC temperature wala also may go around moderate to difficult, because people who have spent time on it could do it. But roots wala to bahut easy tha, ATM wala, as per the analysis that our faculties have been giving. And coming to the slot 3 quants, this is how it is. There were 3 easy questions to pick from, 13 moderate questions to pick from. I would say comparatively slot 3 is little more easier than slot 1 for the quants, at least, because there were 9 tough questions in the slot 1, and there were less number of tough questions in the slot 2. But slot 3 there were 6 tough questions. So in 6 questions में आप फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाता आपका. ठीक है. There were 13 questions which are moderate, and there was there is a question based on octagon which is straight from the mocks that you have been giving in Ekoching. Same Ekoching की मॉक का straight octagon question एक आया था इसमें polygons में, and circle triangles वाला question जो भी आया था वो भी इतना tough नहीं था. So overall, again, this will also fall under moderate, and there is no section or paper where you could say यार बहुत tough था, नहीं कर पाया मैं, ऐसा नहीं था इस बार. So overall मैं score versus percentile बात करूं, if you are thinking around 99 percentile, you should be scoring 39 marks in VARC, right? Yeah, I'm on slot 1 का मैं PPT भेज देता हूं आपको, don't worry.
So 92 marks if you are scoring, that's where you will reach up to 99 percentile. Okay, and if you are thinking around 90 percentile, you should be going around 48 to 49. ठीक है, आई मीन लास्ट ईयर स्लॉट 3 वाले रो रहे थे, बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था। लो, स्लॉट 3 इस बार इतना टफ नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिवली इट वाज इजियर if you compare with slot 1 people, right? Shubham, if you ask me how accurate is this, we are speculating this will be the thing, and हो सकता है plus or minus 10 maximum, right? The range can be plus or minus 10, you आप ले सकते हो plus or minus 5 पे हो जाएगा। ठीक है, स्लॉट 2 वाज द टफेस्ट, और टफेस्ट नहीं बोल सकते जनरल, कंपैरेटिवली बोला तो थोड़ा ज्यादा टफ है स्लॉट 2। For slot 2, if you are asking me, Dhaval, for slot 2, I'll give you the analysis. For slot 2, this should be the percentile. If you're getting anywhere around 10 to 12 marks, you should be touching 80 percentile. 12 to 14 marks. Okay, so compared to 3 slots in terms of difficult, compare 3 slots no, there is not much difficulties. I mean, there is no much difference in the slots. Slot 1, slot 2, slot 3, almost all are same. I mean, section wise, if you see, LRDA in slot 3 was comparatively tougher, I mean, easier. Slot 2 was again on the same level में, इतना difference नहीं है, मैं कोई भी एक slot को बोल नहीं सकता हूँ ये ज्यादा tough है। ठीक है, yeah, Harsh, I am giving you rights to speak. Yeah. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible, Hello. Harsh. Sir, what was the answer for the slot first? Want last question, 20 second. अरे, आपको जो 20 सेकंड क्वेश्चन होता है ना, वो मेरा 20 सेकंड क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे क्वेश्चन बोला तो मैं बोल सकता हूँ आंसर। वापस अनम्यूट किया आपने। नो, द स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन नहीं हो सकता। सो हर्ष, आपकी 22 क्वेश्चन जो भी है, आपको मुझे बोलना है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका Sir, 22 हो सकता है। sir, बिल्कुल। largest value of an integer minus smallest value of an integer. Like that question was there. लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर माइनस Theta स्मॉलेस्ट वैल्यू। based. It was theta based, I think. And I think answer was 15. I'm not sure, but I have typed 15. मुझे याद नहीं है ऐसा क्वेश्चन है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। एवरेज पूछ रहे हो? वन इज मोर देन द सेकेंड वन, 3 नंबर्स का एवरेज, उसका आंसर 15 है। आपका 15 है तो वो सही है, या 15 है, मुझे भी 15 आया वो। परफेक्ट, यस। और रेस्पॉन्स शीट आने के लिए 3 दिन लगेगा। ठीक है, 27th 28th मॉर्निंग को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेस्पॉन्स शीट। ऑन द डे वी विल हैव ए सेशन। I will share you all the scorecards with percentiles. What are the colleges that you may think about attempting for? I mean, filling the form for. ठीक है? Sir, shall I add something? Yes, sir, please. So, a couple of things more, guys. Those who are attending this session, or maybe those who will be viewing this session later on. So, see, CAT is over. Now come out of that hangover, whether it was a bad paper or a good paper, whatever it was, इसको अभी दूर भगाओ। ये हो गया एनालिसिस, समझ लिया कितना परसेंटाइल आया, यू हैव परफॉर्म व्हाटएवर बेस्ट यू कुड, ठीक है। नाउ गो फॉर योर नेक्स्ट पेपर, स्नैप, एनमैट, ज़ैट, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, एंड डोंट गेट डेविएटेड विद बी स्कूल पीपल कॉलिंग यू अप एंड सेइंग कि क्योंकि कैट का डेटा लीक हो जाता है, सो एवरीबडी विल हैव योर नंबर नाउ। They'll be calling you up and saying कि admission close हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, so don't even worry about that. On 8th of January we have kept a catwalk.
where we'll have 30 to 40 B schools, including the top colleges like Nirma, SP Jain, IMI, everybody will be coming there. ठीक है, so don't worry about that. जब तक की लास्ट डेट नहीं आ रही है टेंशन मत लेना. एंड इस हैंगओवर में कि मेरा पेपर बिगड़ गया है, मेरा सेक्शन खराब हो गया है, मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, आगे के पेपर्स बिल्कुल नहीं बिगाड़ना. Those who are taking snap and nmat and cmat, in fact, अब तुम्हारे ईगो को हर्ट भी होना चाहिए अगर पेपर खराब हुआ है तो, और अब वो उसको बदला लेने की भावना से स्टार्ट वर्किंग ऑन टेकिंग द नेक्स्ट पेपर्स वेरी वेरी इफेक्टिवली. ठीक है, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज योर आंसर्स. प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन नॉट गो बैक एंड प्रिपेयर मोर एंड गेट मोर मार्क्स. अब तुम्हें पछतावा होगा कि यार आई कुड हैव डन बेटर, मैं ऐसा अच्छा कर सकता था, मेरा आरसी में और बेटर आ सकता था, वीएमए में ये कर सकता था. भाई ये सब था, यू कैन नॉट चेंज. प्लीज एक्सेप्ट वट एवर इट इज, गुड बैड अगली वट एवर इट इज, एक्सेप्ट. ठीक है, नीड नॉट टू गेट ओवर, नीड नॉट टू गेट अंडर. ठीक है, तो जो सर ने कहा मार्क्स, ये दीज आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस विच वी आर शेयरिंग. ये सभी फैकल्टी टीम ने मिलके आपका मार्क्स का एक रेंज दिया है कि इतने मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आना चाहिए. तो इवन इफ यू आर getting a lower marks, it's fine, accept that. And my only suggestion is start preparing for the other exams, typically the snaps and the nmats and the zats. Okay, yeah, over to you, sir. And one important thing I want to add on, guys, जितना भी इंस्टीट्यूट्स कैट को एक्सेप्ट करता है ना, उन सारे इंस्टीट्यूट में से माइनस IIMs करो. बाकी जो बचा हुआ है ना, तो सारे इंस्टीट्यूट जैट लेते हैं. ठीक है, थ्रू दैट इट विल बी great even if you get into Great Lakes. Maybe you couldn't get into Great Lakes because of through CAT. कैट कैसे भी गया पता नहीं, 3 दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन जैट आपके लिए बहुत अच्छा वेपन हो जाएगा, क्योंकि जैट में आपको सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. इफ यू आर गुड एट वन सेक्शन, एक सेक्शन को फोड़ दो, आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगा. एक्सेप्ट XLRI, कौन सा कॉलेज है जो जैट का सेक्शनल कट ऑफ पूछता है आपको? ठीक है, कैट में ही ये पंगा है, आपको सेक्शनल कट ऑफ, और यू कैन प्ले विद द स्ट्रेंथ्स इन योर XLRI. राइट, आपके पास 30 डेज से ज्यादा है एंड आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस आ गया. अभी तक आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, काफी लोग जो अटेंड किया है कैट, आपका पहली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है इफ यू आर कमिंग फ्रॉम a background of commerce or BBA, right? But once now you have been exposed to competitive exams, now this is the time for you to take this experience and then do better at rest of the exams. And मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने शिद्दत से जान लगा के मेहनत किया तो कोई ना कोई एग्जाम आपके लिए वेट कर रहा है, जो आपको रिवार्ड देगा आपकी एफर्ट्स के लिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए एफर्ट कैट ही दे रहा है. ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड एंड एंश्योर यू विल डू योर बेस्ट. एंड आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रहा है 28 से, या थर्सडे से वी आर स्टार्टिंग योर ओमेट क्लासेस. 3 दिन ब्रेक लो. ठीक है, कम आउट ऑफ दिस कैट, come out of this cat fever, and again introspect yourself, and we will again work upon yourself, we will work upon your weaknesses. And in this 30-35 days जो भी है हमारे पास जैट के लिए, we will turn the tables. मैं बोल रहा हूँ, you will get into colleges which are better than IIMs. That is pretty much possible. So it's superb to get into NMIMS Mumbai rather than getting into IIM both Gaya. If you think about it, it's definitely better to get into Symbiosis Pune rather than getting into IIM Jammu, maybe. Okay, and you will be at a better point. If it's definitely better to get into XLRI Jamshedpur than to get into IIM Rohtak, Kashipur, whatever new IIMs you say. Blackies में 3 IIMs का छोड़ के XLRI जमशेदपुर सबसे ऊपर है, ABC को छोड़ के. मतलब इतना इंपॉर्टेंट है. जैट की फॉर्म भर दो जो भी अभी तक नहीं भरा है. ठीक है, ensure each and every one of you will give that. Last date is 30th November, so you have time. या 30 नवंबर तक टाइम है. हम 3 दिन के बाद रेस्पॉन्स शीट आएगा, बट रेस्पॉन्स शीट के लिए आपको वेट करने का जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, कैट और जैट किसी में भी आप 85% to 90% लाओगे तो अहमदाबाद में माई कैट विल गिव यू एडमिशन, वन ऑफ द सुपर्ब कॉलेजेस फॉर यू टू इफ यू वांट टू गेट इनटू मीडिया और मार्केटिंग. ठीक है, एग्जाम विल बी इन January 5th. हर्ष, ठीक है. नंदिनी मैम, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज. Yes, sir. I just wanted to add, since you have covered pretty much everything.
Just one thing that after slot 3, since I gave slot 3, after slot 3, a lot of people called in and they said that, was it more difficult than all the 3 slots? So, and a lot of people after 2 and 1 also have asked this thing. So I would want to say that what I have, heard people saying in today's day was, ऐसा नहीं था कि कोई slot ज्यादा difficult था, कोई ज्यादा कम difficult था. I guess हर slot में हर एक section का importance था. कोई स्लॉट में एक सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा था, तो कोई में थोड़ा सा एक कम था, बट ओवरऑल तीनों पेपर मतलब काफी टाइम बाद हुआ है. जैसे हर साल हमारे पास लेबल करने को होता है कि ये वाला स्लॉट डिफिकल्ट था, इस बार मेरे ख्याल से वो नहीं था. ऑल द 3 slots were at par with each other, and I guess sections इधर उधर थे. That's the answer, because I've been getting questions like which was the toughest and which was the easiest and all. So I don't think that is the way this year at least. And secondly, again, I'm getting a lot of messages for OMET as well, but I guess Rohan sir, Bhargav sir both have mentioned it pretty well that 28 से we are starting, but काफी लोगों का शायद first week of, क्योंकि एनमैट स्लॉट्स काफी लोगों ने बुक कर लिए हैं, तो आप लोगों के फर्स्ट वीक में शायद दिसंबर में स्लॉट्स हैं या सेकंड वीक में स्लॉट्स हैं. डोंट वरी, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि व्हाट शुड वी डू नाउ दैट कैट इज डन एंड ऑल. डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ओवरऑल ग्रामर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वंस. इफ यू स्टिल हैव एग्जाम्स व्हिच इज लाइक अभी, क्योंकि काफी लोगों का 28 को भी है, 27 को भी है, तो जिन लोगों का इन डेट्स में है टिल नवंबर एंड में ही आपका स्लॉट है एनमैट का, तो डोंट वरी. पोर्टल पे वी हैव अपलोडेड ऑल द ग्रामर, स्पेसिफिकली ग्रामर लेक्चर्स एंड सीआर लेक्चर्स, जो आपको एनमैट में बहुत हेल्प करेगा. तो जिनका बहुत इमीडिएट है, पहले आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, एंड अदर देन दैट आप मेरे को टेक्स्ट, यू कैन ऑफ कोर्स पर्सनली, एंड देन पोर्टल पे जाके ग्रामर का शीट्स भी इट इज अपलोडेड, वोकैबुलरी इज अपलोडेड, सीआर शीट्स आर अपलोडेड. सो गो एंड सॉल्व देम, बिकॉज अल्टीमेटली एनमैट का प्रायोरिटी वही रहता है. इट इज ग्रामर, वोकैब एंड सीआर बेस्ड एग्जाम. So start doing that. And Yeah, many if you have of you have end semester exams, we understand that. Just focus on that, because वो भी important है आपको. ठीक है, by the interview time the results come, you would be expected to show them also. And shift your focus to university exams if at all you have university exams. उसके बाद put your 100% effort in that. As simple as that. Now CAT के लिए आपने जो भी effort मारा है, वो सबके लिए आपको help करता ही रहेगा. And now you will look at the exam paper with more maturity, because you have seen what it is to give this competitive exam, right? And fortunately CMAT is also in January 25th itself. आप लोग CMAT भी भर लो, ठीक है. Even getting into Goa Institute of Management, Great Lakes of Management, and also KJ Somaiya through CMAT by getting 97% is a cakewalk, I'm telling you. For the people who have prepared for CAT by putting their effort, by putting their life in the efforts, it is easy to get 99 percentile or 97 percentile in CMAT. 3 घंटे का पेपर होता है, L1 से भी easy questions होता है. You will be able to crack it. And CMAT का भी आप सोच सकते हो to, I mean, if at all you want, I mean, CAT में 85-90 percentile आया तो आपको गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 4 ये सब आ सकता है, ग्रेट लेक्स ऑफ मैनेजमेंट, केजे सोमैया. लेकिन CAT में उतना नहीं आ पाया तो CMAT में 97-96 percentile लाओ. You will be able to get all these institutes again for you. There is a second chance for you. ठीक है. ठीक है guys, we are done for the day. For all you have any questions, please ask. And any faculty team wants to share something, please go ahead. How is NAP and NMAT different than CAT? उसके लिए WOMET का classes रखे हैं हम शुभम. You can attend them. Right from Thursday they'll start. Yeah, I think we will be sharing the recording and the PPT later on in the group. So Yeah. I think everybody can view this PPT later. Yeah, Sakshi, it will be possible. We are providing both offline and online. You can take anything for WOMET classes. You have your NMAT on 26th. Siddhant, if anybody is having WOMETs in next week or within 4-5 days, please meet us personally. Is booster course good for CMAT? Oh God, booster course तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. booster course मत ही करो CMAT के लिए. तो CMAT, I mean, सिर्फ basics करके छोड़ दो. You don't need to go for the advanced or MPQs. ऋषि, अगर ZAT और CMAT में से कोई एक देनी हो, कौन सी देनी चाहिए? विदाउट एनी सेकंड थॉट ZAT देनी चाहिए. लेकिन अमन, मैं आपको बोलूंगा कैट के रिजल्ट के ऊपर डिसाइड करो CMAT देना है या नहीं, लेकिन ZAT तो किसी भी हालत में दे दो.
सर सीमेट के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए क्या कॉलेज में? हाँ, वर्क एक्सपीरियंस तो थोड़ा ऐड ऑन होगा थोड़ा, नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव। सिद्धांत, नीड पर्सनली सीमेट करने से कौन सी कॉलेज बेस्ट होती है? बेस्ट कॉलेज जमनालाल बजाज होती है, बट यू नीड टू गेट 99.9 percentile for that. So the second best college I would say would be Goa Institute of Management and KJ Somaiya, SDA Bokoni, Wellingkar, Kumba, Soil. These are the colleges which are very good based upon CMAT, and Great Lakes of Management also is very good for through CMAT. Sir, do you think the next year the same level of paper will be there or more difficult can you expect? Aaron, you never know that. Anything can happen next year. Definitely I cannot say right now about that. So next year CAT के लिए 1 year बाकी है. अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ? अक्षय, you can meet personally for the same or discuss personally for the same profile के लिए. If at all you are giving next year CAT, I'll discuss with you and then tell you the courses that you need to do to enhance your profile. ठीक है. Anything else? My pleasure, Rishi. We are all here for that. We'll give all the support we can. Perfect. Yes, I think we are all done with any questions. If at all you still have any question, yeah, we are there till the end. Rishi, don't worry. If at all you still have any questions, we are always there. A message away in your WhatsApp. Just आज जाके अच्छा सा खाना खाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है, पार्टी करो, मजे करो, मूवी जाओ, ठीक है? 2 दिन तक रेस्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक लो, and then get back for the chat and hit it hard. Anyhow, your response sheet will wake you up in 3 days. ठीक है? Do whatever you want to do right now. Take care, guys. Bye bye. You have to give in 2025, Meet. ठीक है? Yeah, I'll send Devanshi. Yeah, I'll send the